Let's start with SS600 using the work of another auditor. अब using the work of another auditor क्या है? पहले तो acceptance is principal auditor. Principal auditor कौन होता है? जो मेन कंपनी का जो मेन ऑडिटर होता है वो अदर ऑडिटर मतलब जो सब्सिडरी का ऑडिटर कंपोनेंट्स का ऑडिटर जो करते हैं वो। अब ज्वाइंट ऑडिट और ये मैं अलग क्या की ज्वाइंट ऑडिटर में एक ही कंपनी के एक ए लिमिटेड कंपनी है तो उसके ही अपॉइंट किया जाता है जॉइंट ऑडिटर्स। बट ये क्या यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अब ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, तो बी का अलग है, सी का अलग ऑडिटर है और ए का अलग है। तो ये जो ए लिमिटेड का है तो वो प्रिंसिपल ऑडिटर, ये सब अदर ऑडिटर्स दूसरे, तो ये मेन डिफरेंस है ना। वह क्या है अब? एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑडिटर तो किस फर्म को प्रिंसिपल ऑडिटर मानेंगे? इफ द मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन इज प्रिंसिपल मटेरियल, इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। मतलब उस जो भी चीज प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसकी मटेरियलिटी क्या है इन द ओवरऑल पर्सपेक्ट। देन डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब उसका knowledge क्या है regarding each and every components of the business. So degree of knowledge regarding the business of components, risk of material misstatements, components audited by other audited. The, the risk of material misstatements in the financial statements of the components audited by other auditor and the performance of additional procedures having significant participation. So the performance of additional procedures as set out in the essay regarding the components audited by other auditors resulting in the principal auditor having significant participant participation in such audit. तो उसका significant participation लगेगा। तो क्या क्या पॉइंट है? तो पहला, materiality of the portion which principal auditor audits, degree of knowledge, degree of knowledge, degree of knowledge, फिर risk of material misstatement, and the performance of the additional procedures having significant participation. So, materiality of portion which principal auditor audits, degree of knowledge regarding business of components, risk of material misstatements of the components audited by the auditor, and the performance of additional procedures having significant participation. तो इसका हाँ, तो ये होगा मटेरियलिटी, डिग्री ऑफ नॉलेज, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन। नाउ प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही कैन विजिट द कंपोनेंट्स एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, visit the components and examine the books of accounts. He has the right to visit components and examine the books of accounts, and records if necessary. तो वो books of accounts and records को वहां जाके चेक कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, कंसिडर कंसिडर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, मतलब अगर वो मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है तो उसकी कॉम्पिटेंस चेक करनी पड़ेगी। अगर वो मेंबर ऑफ आईसीआई है तो वो सीए है तो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ कंसिडर प्रोसीजर टू ऑब्टेन साइट दैट वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट, मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिटर चाहिए कि अदर ऑडिटर का वर्क सफिशिएंट है। अब उसमें क्या करेंगे? when using the work of auditor, the principal auditor should ordinarily perform the following procedure। मतलब जब भी अथर ऑडिटर की प्रोसीजर है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ये सब चीजें करनी है। क्या है? एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, मतलब जो भी एरियाज है उसमें स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफाई कर दे। देन प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, मतलब एक ब्रांच एक मतलब एक सब्सिडरी अपने होल्डिंग के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रही है उसके ट्रांजेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देन टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जो भी टाइम टेबल है, मतलब टाइम टेबल क्या है, किस टाइम पे क्या क्या होना चाहिए, तो वो बता देना चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर। एंड एडवाइज अदर ऑडिटर ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अदर ऑडिटर को क्या क्या बताना है? एरियाज, प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, timetable for completion of audit, advise the author auditor of accounting, auditing, and reporting requirements. Now, आगे बढ़ते हैं। Review the written summary of other auditor procedures. So, the principal auditor might discuss with the other auditor the audit procedures applied or review a written summary or the other auditor's procedure and findings, which may be in the form of a completed questionnaire or a checklist. तो इसको रिव्यू रिटर्न समरी, रिव्यू करनी है रिटर्न समरी। सो रिव्यू रिटर्न समरी और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। Then consider the significant findings of the other auditor. The principal auditor may consider it appropriate to discuss with other auditor and the management of the component, the audit findings or other matters affecting the financial information of the components
He may also decide that supplemental tests of the records or the financial statements of the components are necessary. Such tests may, depending upon the circumstances, be performed by the principal auditor or the other auditor. Now, documentation considers significant findings of other auditors. वो तो ठीक है. Now, documentation क्या करना है? Components of financial statements are audited, मतलब जो भी सब्सिडरीज है, जो भी दूसरे नीचे की जो है, वो तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी एज अ होल. तो जो भी कंपोनेंट्स की अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो उसको अपन अपन को देखना है. सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर. नेम्स ऑफ अदर ऑडिटर्स. एनी कंक्लूजन्स रीच्ड दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर नॉट मटेरियल, मतलब कोई भी ऐसा कंक्लूजन रीच हुआ कि भाई ये चीज मटेरियल नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा. तो कंपोनेंट्स, फिर नेम्स ऑफ अदर ऑडिटर्स. एनी कंक्लूजन्स रीच्ड दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर नॉट मटेरियल. देन प्रोसीजर्स परफॉर्म रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर्स फॉर्म हुई है, और ओवरऑल कंक्लूजन क्या रीच किया है अदर ऑडिटर ने, एंड द मैनर ऑफ डीलिंग विद मॉडिफाइड रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर while finalizing the principal auditor's report. मतलब जो भी लास्ट में क्या किया, अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट आया तो लास्ट में क्या किया, वो तो क्या क्या है, components which financial statements are whose financial statements are audited, names of the other auditors, any conclusions reached, then procedures performed, conclusions, any conclusions reached that that individual components are not material. जो भी conclusion reach हुआ कि individual component material है कि नहीं, वो फिर procedures performed regarding the components, conclusion reached, manner of dealing with modified report of other auditor while finalizing the principal auditor's report. Now, coordination में क्या है? There should be sufficient liaison or coordination between principal auditor and the other auditor. Principal auditor may require other auditor to answer a detailed question. A detailed questionnaire मांगेगा. Then other auditor should coordinate with principal auditor with respect to adherence of the timetable. जो भी timetable बनाया था वो other के उसके according काम हो रहा है कि नहीं. Bringing to the attention of principal auditor any significant findings. अगर कोई significant findings हुए तो वो principal auditor को बताना. Then compliance with the relevant statutory requirements and respond to the daily detailed question है. तो क्या करना है, टाइम टेबल को अधर करना है, अधर करना है. ब्रिंगिंग टू द अटेंशन प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हुई है तो वो अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर को देना है. देन कंप्लायंस विद रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द डिटेल क्वेश्चन है. जो भी डिटेल क्वेश्चन है उसको दिया जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. देन प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर अदर ऑडिटर टू आंसर डिटेल क्वेश्चन है. तो ये हो गया अदर कोऑर्डिनेशन में क्या करना है. नाउ reporting में क्या, when principal auditor concludes that work of other auditor can't be used, work of other auditor can't be used and not been able to perform sufficient additional procedures. वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कांट बी यूज, जो भी अदर ऑडिटर उसका काम अपन यूज नहीं कर सकते, और या तो फिर नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडिशनल प्रोसीजर्स, जो भी एडिशनल प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म नहीं कर सकते. देन express a qualified or a disclaimer of opinion because there is a limitation on scope of the audit. To express a qualified or disclaimer of opinion because there is a limitation on scope of audit. Now, division of responsibility क्या, principal auditor would not be responsible for the work entrusted to the other auditors except in circumstances which would have arose his suspicion. मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर हर काम के लिए हर अदर ऑडिटर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बट ऐसा नहीं चलेगा कि वो क्या वेलापन करे, उसको सस्पिशन, उसको क्या करें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसकी भी मिस्टेक निकालनी पड़ेगी. अगर वो ऐसा बोलेगा अगर गलती मिली फिर भी वो निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जस्ट उसको अपने एरिया में अगर दिख रहा है कि भाई ये गलत है तो उसको वो सस्पेक्ट करना पड़ेगा ना. एक बार फटाफट फिर से कर लेते हैं. एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर क्या है, acceptance acceptance as a principal auditor. Materiality of the portion which the principal auditor audits, degree of knowledge, risk of material misstatement and performance of additional procedures having significant participation. Now, principal auditor responsibility क्या, visit the component and examine books of accounts, consider professional competence of other auditor if not the member of ICA है तो ठीक है. Consider procedures of to obtain cite that work of other auditor is adequate
areas requiring special consideration, procedures for identification of intercomponent transactions, timetable, advise other auditor of accounting, auditing, and other reporting requirements. Review the written summary. Review the written summary or other audit reports and consider the significant findings of other auditor. Now, documentation के components of financial statements are audited by other auditor and the significance to the financial information, names of other auditors, any conclusions reached, procedures performed regarding components, conclusions reached, manner of dealing with modified report or other auditor report while finalizing principal auditor's report. Then, coordination में क्या है? Sufficient liaison or coordination between principal auditor and other auditor. Principal auditor may require other auditor to answer a detailed questionnaire. Written communication करना है. Other auditor should coordinate with the principal auditor while adhering the timetable, bringing to the attention of a principal auditor significant findings, compliance with relevant statutory requirements, and respond to a detailed questionnaire. Now, reporting here when principal auditor concludes that work of other auditor can't be used, or have and not been able to perform sufficient additional procedures, नहीं कर सकते, can express a qualified or disclaimer of opinion, but because there is a limitation on scope of audit, because there is a limitation on the scope of audit, then subject of modification मतलब ये क्या है कि जो भी सब्जेक्ट है वो मॉडिफिकेशन का वो सब नेचर एंड सिग्निफिकेंस का होना चाहिए ओवरऑल एंटिटी के लिए. नाउ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Principal auditor would not be responsible for the work entrusted to the other auditors except in case of suspicion. And that was it. That was SA 600 using the work of other auditors.